दशकं 38 नारायणाखिलगुरु बहवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। आनन्दरूप बहवन्नयितेवतारे प्राते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमानैः कान्तिव्रजैरिव घना घनमण्डलैर्द्या मा वृण्वती भ्रुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैर् आशासिताप्तिविवशेश्च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमाया क्लेशाबहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतेर्यद्किरीटकटकाङ्गतहारभासा शङ्खारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थले सुकनिलीनविलासिलक्ष्मी मण्डाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृतामलक्ष्मी उन्मार्जयन्निव विरोजितवासुदेव शौरेस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पबुलकोद्गमगद्गधार्त्रतुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तं देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली नालूनिधात्रसमनेत्रकलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैर् अध्यादितेन मुदितेन चिरं नुतोऽबुः मात्रा च नेत्रसलिलाधृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिभोत्यधाभ्यां मातुर्गिरादतितमानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्तधनुनं धनुजाय याते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनुः त्वामस्तयोरदितचित्तविधार्यमार्यै अम्बोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तथा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमता कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यगडिसङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरिफणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शित पतो मनिधिपिधेन त्वां धारयन् सकलु धन्यधमः प्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।